हो गया मेरा बहुत कुछ करना है। अरे ये तो फोटो काट लिया है। नहीं पढ़ा मैं सारे फोटो उठाना है, ठीक है? एक घंटा का बाद फिर फुल वाल के खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हारे फोटो ये बड़ी है क्या कौन बनाया? बहुत बहुत बढ़िया। कौन बनाया? बहुत बढ़िया। इसे डाउनलोड कर लो। 70% questions you will be in a position to write it today itself without any preparation. There are some concepts, they are twisting and asking questions. ठीक है? इसमें दो तीन चीज मैं बताता हूँ तुमको। अच्छा, अभी तो मेरा किताब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें 3 questions straight are picked up from the book. नंदिनी गुप्ता का एक आर्टिकल है इन माय बुक। They are informalization of labor करके लिखा हुआ है। And the same question they have picked up. Governing urban poor दीपंकर गुप्ता का आर्टिकल में है, उसको उठा के क्वेश्चन दिया। Governing poors, ठीक है, urban poors, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो what you do now is that book specific chapters on poverty. Poverty में 3 चैप्टर है, एक नंदिनी गुप्ता का है, second is दीपंकर गुप्ता and third is दीपक भट्टाचार्य। ये तीनों चैप्टर तुम पक्का पढ़ोगे। That will be using in economics chapter as well. ठीक है, आसपास आइडिया दूंगा तुमको। The book on society and culture in India जो एडिट मैंने किया है, ये किताब तुमको आगे पढ़ना पड़ेगा। 3 questions are lifted from that particular book. One is informalization of labor. Second is governing urban poor, then persistence of poverty. जो 3 क्वेश्चन आया है तुम्हारा, that has picked up from that particular book. ठीक है? ये बुक से पॉवर्टी का 3 articles are there, you must have to read. One is Nandini Gupta, she is a professor of Oxford University,
specializing in the field of poverty, giving a new dimension to the explanation of poverty. Targeted approach to fill करेगा. And that not only you are preparing for sociology, GS में भी ये approach को तुम use करोगे. What is targeted approach? मनरेगा is a targeted approach. समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है? Self-help group is also targeted approach. You are targeting your group, giving them benefit. Annapurna is also targeted approach. Balika Samriddhi Yojana is also targeted approach. So how targeted approach to poverty alleviation is giving rise to persistence of poverty. आज किसको टारगेट करो, दूसरा और किसको टारगेट करो. So the targeted approach gives rise to persistence of poverty. Urban poor and public policy are becoming very strong and contentious issues these days. Okay. Who are the urban poor? Urban poor are the people, those who are coming from rural India. They are semi-skilled. इसमें क्या किया? सूरज को. Last year they gave lot of importance on institutions. समझ आ रहा है? So what UPSC is doing now? UPSC is not following basic standard. While preparing the questions. Standard means what? Questions are not coming from all the topics. So students are very selective. उनको पता है. Thinkers are key areas of sociology. सारे thinkers पढ़ के जाते हैं. इस बार दो question है thinkers. From first two chapters, 100 marks question has come. अच्छा देखो कैसे लंबा क्वेश्चन को शॉर्ट बना देंगे. How the relationship between sociology and other disciplines are changed. You are reading novels, if at all you are reading. Read your class notes, at least for an hour or 2 hours every day. Only my humble request to you, not to lose touch with the subject. Because if you are losing touch with the subject, I cannot do much. Therefore, whatever I have taught, that should be somewhere there be in your mind. दो घंटा इसको पढ़ लेना. जहाँ doubt होगा तुम underline कर लेना. That can be clarified. But you are reading that regularly the way you are regularly attending the classes, so that it becomes easier for me during the test series time to frame questions and you are supposed to write the answer. Okay, number one. The source materials I told you, you must have to read them in coming 2 months because from January you will be preparing for your prelims. January से sociology नहीं पढ़ना है. ये जो इग्नो बताया, मेरा बुक बताया, रिजर्व बताया और लंबस बताया, इसको जो पढ़ना है, जो विद्वान बनना है, अभी 2 महीने में बन जाओ. इसको सारे किताब पढ़ के ऑनलाइन मत करना है. छोटा-छोटा पॉइंट इसमें लाके if required, you write in the notes. Many times when you are reading IGNO, you will be finding out class note has got more information than IGNO. Only the additional points as and when that is there, you add that to class notes. And if possible, make the smaller notes from out of your class note. इस बार मैंने प्रॉब्लम ये देखा. क्वेश्चन तुम्हारा आया है. Suppose how is positivism different from anti-positivistic approach? तुम लिखे हो 10 पेज, क्वेश्चन आंसर करना है 150 वर्ड में. 5-6 स्टूडेंट्स told me सर एक एक क्वेश्चन उनका छूट गया, 10 नंबर का छूट गया. आंसर एक भी छूटना नहीं चाहिए. Because if you are reading from the notes, you may get on the same topic a short note to which you can write a long answer. छोटा आंसर लिखने का बनाओ इसको हैबिट. क्वेश्चन आता है कि पॉइंट करके 10 पॉइंट लिख लोगे. 10 मिनट में खत्म होना है पेपर. एक आंसर पेपर खत्म. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हैबिट बनाना है तुमको. नेवर एवर यू शुड बी स्किपिंग आउट ए सिंगल आंसर. सिंगल आंसर का मतलब 5 नंबर छूट गया. 5 नंबर का मतलब 50 का नीचे आ गया. तो इसलिए you should be careful to make it sure that none of the questions are left out. Even though छोटा-छोटा करके आंसर लिख लो, नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तो इसके ऊपर ध्यान देना. And newspaper you must have to read every day. ये 3 चीज तुम कर लोगे, तो things will be clear. And sociology को जितना अप्लाई कर सकते हो, पेपर 2 में यूज करोगे, पेपर 1 में यूज करोगे, ऐसे में यूज करोगे. That will be giving a different dimension to your answer. ठीक है? इतना और कुछ नहीं. ठीक है? Thank you very much. It was a pleasure to teach you, to know you. मैं बैठा हूँ, अरे तू काम नहीं कर रहा. ठीक है? And every batch, I don't know how long I am going to teach, but I want to enjoy my teaching. And thankfully, Vajiram has given me this kind of students. And I'm thankful to Vajiram.
Because most of you, honestly telling you from the core of my heart, the kind of spark you exhibit in the class, that keeps me going. कभी कोई मैं अकेला बैठ के सोचता है और पढ़ाने में क्या फायदा है, नहीं पढ़ाएंगे. Every batch I am deciding not to teach next batch. Your smiles are giving me strength. I keep on teaching. I don't know how long I am going to teach, but I'll be teaching that till the time I enjoy my teaching. हाँ, जब तक मेरे टीचिंग में मजा नहीं आएगा मैं उस दिन नहीं पढ़ूंगा. ठीक है? चलो. Thank you so much. क्या करना है?